Okay, Bismillah Rahman Rahim. Concentrate. We had one button here. Okay, we got a button, and we which is saying click me, right? And we on click we created some object, okay, of class date, right? We firstly call the function. We firstly call the. Now I want this function to return something. Yesterday we called the function without sending something. Then we called the function and sending something. Now we call the function fun. We send something and also return something. Because it is in a button, so that means on the click of button, this function will return something. Will and that will go to the on click. Maybe I will feed that to the alert. Maybe I feed that to what? So I have here on click. What you're gonna do on click is you actually are trying to do alert like this. See, I am trying to do the alert on the say in the alert. I am saying alert being called. Okay, see what I'm doing on the click. What I'm doing, I'm saying alert. So alert is kind of a dialog box, right? Alert is what? A dialog box which come up. I say control S. So that means that's the problem. Yeah, right here. Control S. There is some अरे alert है ना ये देखो 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 डबल कोट है ना ये अलर्ट का अपना डबल कोट है ना अंदर वाला और ये हो गया बंद उसके बाद वो वाला डबल कोट है किसका ये क्या हो रहा है कहाँ पे ये है ना ऑन ये है आपका ये हो गया अब अलर्ट को क्या देना है you give some parentheses here and parentheses here right and here you want to give some message why is the error coming ये तो ठीक है ना यहाँ पे कहाँ डबल कोट है इसमें सिंगल कोट में दूंगा बिकॉज डबल कोट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम आउटसाइड डबल कोट है ना सो दैट इज व्हाई इफ यू पुट डबल कोट इसको लग रहा है कि वहीं पे ऐड हो रहा है ठीक है ना तो इसलिए इसमें सिंगल कोट देंगे ताकि इसको उस डबल कोट और इस डबल कोट में प्रॉब्लम जब मैं यहाँ डबल कोट दे रहा हूँ ना ये इस वाले को क्लोज इधर कर रहा है ठीक है इसलिए मैं सिंगल कोट में लिखूंगा alert being called right no issues now control S give it a go now if you click the button on the click of it this alert will come which is saying alert being called but now what I'm going to do is I want to use the alert but here inside the alert I call the function I call this function here which is in my script file this function the function fun I'm calling this okay and I'm going to send the current date whatever the date is I want to send that to this function this is what we did yesterday rest is same okay so how I send how I create a date object because date is an object I say new firstly create a new date object what should you how I write the date D capital D why are D capital because class names always are capital start with the capital letter you should understand that okay that is why if you create your own classes somewhere in Java or C++ or wherever you should create a capital name start with the capital letter okay it is default the classes names say name conventions and here it is predefined so I have to use exactly what they have defined it अगर आप अपना क्लास बनाओगे विद स्मॉल लेटर वो तब भी चलेगा क्योंकि वो आप बना ही रहे हो ना लेकिन ये वाले में नहीं चलेगा क्योंकि प्री डिफाइंड so I say date class okay then dot get day when I say get day we use camel case we use what if you create your own methods we use camel I have told you camel casing is start with the small letter and the next word capital D like this with the parentheses right so you say date because when the D you see D it's a capital okay here you see capital that means it's a class dot get date ये दो वर्ड्स का बना है ना गेट और डेट का या तो आप अंडरस्कोर डालते हैं बीच में बट द मेन थिंग इज वी डू केमल केसिंग डू व्हाट
camel casing में हम get लिखते हैं, no space, no underscore, then D capital. The next one. This is called camel casing, right? Now what will happen by this is that we call the function when sending the current. This will be like 0, 1, 2, 3, 4. So today is 6, Saturday. Okay, the 6, it will be like you are sending 6 to the function. You're sending what? So this is my, I will control as this, and then I go to the script. That means this day will hold the 6. This day will hold what? Because जो current date है इस वक्त 0, अगर Sunday होता तो 0 आ जाता, Saturday है तो 6 आएगा. Okay, so 0 to 6 run होता है. So that means 6 will be fed to this fun, to this day. What will be in the day? 6. अगर कल Friday थी तो 5 दे रहा था ना ये, तो आज ये 6 देगा because आज Saturday. ठीक है ना? तो उसके हिसाब से मैं काम करूंगा, लेकिन मुझे ये स्विच वगैरह मैंने किया है, कल हम कर रहे थे इस पे काम. I just close it because what I want to do is I want to return. I want to, ये स्विच का ये भी है ना, ये मेरा फंक्शन है यहाँ से, ठीक है ना? दिस इज माय फंक्शन. मैं नीचे ऊपर ही लिखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये नीचे, ये मेरी फंक्शन है, ठीक है ना? ओके, अब डे में क्या है? 6. आई यूज मे बी इफ एल्स. इफ डे is greater than, say for example 5, that means it is 6 or 7, whatever it is. Then I say, then I do what? Because I want whatever this function does, it also returns. It, whatever it returns will go to the alert, will go to, so whatever returns will come here. Say if I return, say for example I delete this, if I say here Monday, for example, what I say? So it will alert the Monday. So my function should return something which will fed to alert, right? Control Z. Now what I am doing is, for the function I am sending it the current day. Okay, get day. I should say get date, not I should say get day. I should what should say, because get day I should say, because otherwise date means everything, right? Control S. Now here I am doing what? If day is greater than 5, obviously it is today greater than 5. I should return. I should what? I should return what? It's weekend. It's weekend. I'm saying like this. It's a weekend, right? Else I should return it's a working day. It is a working day. Right, sir? Does it make sense what I'm doing? And that's it. So I am saying if day is greater than 5, obviously it is greater than 5 today because it's 6. So what will be returned? It's a, और ये weekend किस में घुसेगा? Alert में. Alert will do what? Let us see. Click me. So it's saying it's a weekend, right? बस में आ रही है? Why? Because क्योंकि ये रिटर्न हो गया. ये अगर आपका ऐसा है, इफ एल्स ऐसे हैं, तो उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं. अक्सर क्या करते हैं इस्तेमाल? लेट्स ट्राई टू यूज सेम थिंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर नाउ. देखिए एग्जैक्टली ऐसे, रिटर्न day greater than 5. If day is greater than, then question mark, then what should I do? I should copy this, control C, control V, colon, okay, it's a control C, control V, right? And terminator may be on the end. So what I'm saying return if day is greater than 5. This is ternary operator because it works on 1, 2, 3. 3 things are here. So day is greater than 5. If it is like if day is greater than 5, then return this. Else return this. It is same as this code above. Top code I have written on a single line using the ternary operator question mark. Question mark is called the ternary operator, where we say like it is like actually if day is greater than 5. If it is true, अगर true है तो ये हो जाएगा, अगर true नहीं है तो
So it's one and the same thing. Say Control S, and I go here, and I just do it again. Let's click me. It's working the same. It is weekend. Does it make sense? ठीक है ना? So ternary operator समझ आ गया? So function को हमने without pass किया कुछ, फिर pass किया, फिर return भी किया. That is all for functions. Now we go for the loops. Go for what? In the loops we have all the loops we have. Like we have while loop, do while loop, for in and for off. Okay, for like with a for each loop in the Java and all, for each loop इस तरीके से यहाँ पर भी है. We have for in and for off. ठीक है, तो loops पढ़ेंगे अब. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा काम, मैं इसको alert को हटाऊंगा. On click I will just call the function. I will just do what? I will just call the function without anything in it. Okay, Control S, and here I run some loop. I will close this also. Here I'll loop. Firstly, I will use the say maybe while loop. Okay, I say let I equals to 0. Okay, then I use the while loop here. While, simple as it is, while I is less than 10, जैसे ना करते थे हम C में. Okay, you say document dot write, document dot write, इनसे पूरा पेज भी आ जाएगा लिख के. ठीक है, I will say value of I equals to value of I equals to, then I say concatenate with the value of I, and also I have to do I plus plus, right? Control S. Now when I call it here, refresh this, click me, it is writing this, value of I is equal to 0, but I need a backslash n also, right? So for that what I do is I should actually do it like this. Why I'm doing it? I should like this. Okay, एक मिनट है, इसका ये क्यों नहीं आ रहा है ये वाला. What I do here is I, उसके बाद backslash n चाहिए ना मेरे को. I can do here simply plus concatenated with, in double quotes, use the br tag. So this way you can understand we can use the tags also there. Okay, I say click me, now it goes in a new line. Okay, value of I is equal to 0 and so on. So this is the while loop. Why are you laughing? ये वाला कुछ नहीं, मैंने फंक्शन को कॉल की बस. ऑन क्लिक मैंने फंक्शन को कॉल की और कुछ नहीं किया. ठीक है जी, फंक्शन को कुछ भेजा नहीं, सिर्फ हम लूप सीख रहे हैं ना इसलिए. अच्छा, अगर मैं यही काम करता डू वाइल से, तो उसमें क्या लिखा था, वाइल नीचे जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहता डू. अब इसमें एक चीज तो पता ही है कि एक बार कम से कम ये चलेगा ही चलेगा. अगर पहली बार भी कंडीशन फॉल्स है तब भी एक बार ये चलेगा. Control S and you do it, it is doing same thing. Okay, now I want to do same thing using the for loop. I want to do the same thing using the for loop. So we say loops. Let me close this. Now I say for, अच्छा ये क्या हो गया, अच्छा ये डिलीट ही हो गया सारा. ये रखता हूँ मैं फिलहाल, यहाँ से जाएंगे. हाँ जी, फॉर उसमें लेट करेंगे, लेट I is equal to 0, I is less than 10, I plus plus, और यहाँ पे क्या करेंगे, document dot now I say simply value of I equals to concatenated with the I and concatenated with it with the br tag to get in a new line. ठीक है जी. Now click me, it is doing same thing. ठीक है. Okay, simple as it is. This is the for loop where we have everything in there. We know already these things. Now for in and for off, we got two things with the for.
So now I just close this. I go here. Say for example, I got let AR, I create an array of fruits. Okay. I'm saying double quote apple, comma, double quotes banana, chop chop banana, famous. I say cherry, comma, I say pear, and so on and so forth. Okay. We got the array. We got in what? It's the same simple arrays. We don't need no speciality in it. Same whatever we have read so far. C and Java and C++. It's the same thing. Let AR is like apples, banana, cherry, and so on. Now I want to loop through it. Is the for loop. Either I will go for the indexing and then say no AR of 0, AR of 1, same thing. For I is equal to 0, I is less than whatever 1, 2, 3, 4. Okay. And print I will do document dot write AR of I. इसमें कर देते हैं. या हमारे पास for in है. क्या हमारे पास है? I say for, I say x in AR, x in AR. Here I say document dot write, document dot. What should I say here? He's saying x. If I say x, okay, plus I will have some kind of a space. Okay. What will be output? Control S. Output will be 0, 1, 2, 3. See, because the x, this is not for each loop. Java ka. That's C++ में क्या था? Exactly, because it gives index only. It gives what? If you use in for in, it gives only index. So if I would have used it here for off, then it is your that thing. It is your what? It is actually single off, not OF. Control S. Okay. Now it is giving exactly. It is like for each loop. जो आपका for या extended for loop हमारे होती थी ना, जैसे C++ जावा में पढ़ते हैं, उसमें सीधे वो बंदा कहाँ से शुरू कर रहा है, एरे कितनी बड़ी है ना, वो सारा खुद ही निकालता है. आई डोंट नीड टू सी द साइज ऑफ द एरे, एंड किधर करना है, शुरू किधर करना है. आई डोंट नीड टू डू दैट. ऑटोमेटिकली 0 से शुरू होगा, जितनी भी एरे की लेंथ होगी वहां तक चलेगा. ठीक है ना, खुद ही चलेगा और एक एक करके एक्स में डालेगा. जैसे पहले एप्पल गया एक्स में और एक्स आपने प्रिंट किया, उसके बाद फॉर फिर से आ जाएगा, खुद इंक्रीमेंट होगा, एक्स प्लस प्लस खुद हो जाएगा, वो बनाना में जाएगा, बनाना जाएगा एक्स में. ठीक है ना. उसके बाद वो चेरी में जाएगा, एक्स जाएगा चेरी के पास, चेरी किस में घुसेगा, एक्स में, और एक्स आप प्रिंट कर रहे हैं. अब समझ आ रहा है फ्रेंड. उसके बाद नेक्स्ट पियर के पास जाएगा, पियर जाएगा एक्स में, और एक्स प्रिंट हो रहा है. एरे खत्म हो गई, खुद आउट ऑफ लूप जाएगा, आपको करने की जरूरत कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज डन ऑफ इट इज ओन. ठीक है ना. लेकिन अगर मैं इन करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, इसमें ये फायदा है मेरे को, इनका ये फायदा है कि 0 से शुरू है, कहां तक एरे खत्म होती है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा. ठीक है ना. लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं तो मेरे को इंडेक्स आ रहा है, बिकॉज़ एक्स में इंडेक्स है. इस वक्त एक्स में क्या है, महराजदीन बताएगा मुझे कि हाउ आई यूज फॉर एक्स इन. बाकी चुप बैठेंगे. ठीक है ना. ओनली महराजदीन विल टेल अस, ही कैन डू इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. फॉर एक्स इन एआर में कह रहा हूं, चूंकि एक्स के पास है क्या, पहली बार 0 है, दूसरी पास 1 है, तीसरे पास 2 है, नेक्स्ट टाइम 3 है. जो ही एरे खत्म हो जाएगी ये बाहर आएगा, आएगा ना ऑटोमेटिकली. तो मुझे लेकिन प्रिंट करना है एप्पल्स वगैरह. सो हाउ आई डू इट. नहीं, मैं कह रहा हूं यही इन ही इस्तेमाल करना चाहता हूं. आई एम यूजिंग सेम इन, यूजिंग द एक्स दैट इज इंडेक्स. आई वांट टू प्रिंट एप्पल, बनाना, व्हाटएवर. Exactly. So I will do here AR of x, print AR of x, right? जैसे ना हम करते थे using the cancel. ये क्या होगा, so, यहाँ पे जाए, Control S करें. Now if you do it again, it will print me the apple, banana, cherry, and ठीक है ना. So this is our for loop. Okay, do while भी हो गया, while भी हो गया, functions भी हो गए इसके. ठीक है ना. Okay, that's